In this video, we are discussing the sixth numerical from the exercise for the chapter Units and Measurements, which is the first chapter for 11th standard physics. So let's get started. Now question में we are in a workshop and हम एक worker को observe कर रहे हैं and that worker is measuring the length of a steel plate. And इस process को करने के लिए the device he is using is a vernier caliper. So generally vernier caliper is a device used to measure the thickness of objects, but at a basic level it is calculating distance. And इस device का हमें least count भी question में दिया गया है and this least count is said to be 0.01 centimeters. We'll be using this information अगर हमको हमारे values को round off वगैरह करना है तब. बट हमें जो सिनेरियो दिया गया है उसके अंदर हमारा जो वर्कर है दे आर मेकिंग मल्टीपल मेजरमेंट्स. जनरली हम प्रैक्टिकली जब भी किसी चीज़ को मेजर करते हैं हम सिर्फ एक बार नहीं मेजर करते हैं बिकॉज देर इज स्कोप फॉर एरर्स. तो वी मेक मल्टीपल मेजरमेंट्स. सो सिमिलरली हमारे वर्कर ने टोटल ऑफ 4 मेजरमेंट्स ऐसे किए हुए हैं एंड दिस मेजरमेंट्स में जो भी लेंथ यील्ड हुआ है या जो भी लेंथ कैलकुलेट किया गया है वो लेंथ्स की रीडिंग हमें दी गई है. तो सबसे पहले हमें जो है फर्स्ट मेजरमेंट में द मेजरमेंट वाज 3.11 सेंटीमीटर्स. सेकेंड मेजरमेंट दैट इज सेकेंड रीडिंग में हमें आया था लेंथ एज 3.13 सेंटीमीटर्स. हमारे थर्ड मेजरमेंट या रीडिंग में आया था हमारा लेंथ एज 3.14 सेंटीमीटर्स एंड फोर्थ मेजरमेंट में हमारा लेंथ आया था एज 3.14 सेंटीमीटर्स. एंड बेस्ड ऑन ऑल दिस रीडिंग्स हमें जो कैलकुलेट करना है तो फर्स्ट क्वांटिटी जो हमें कैलकुलेट करनी है दैट इज़ द मीन और द एवरेज लेंथ ऑफ आवर स्टील प्लेट. सेकेंड क्वांटिटी हमको कैलकुलेट करनी है द मीन एब्सोल्यूट एरर दैट इज इन्वॉल्व इन द मेजरमेंट्स एंड द थर्ड क्वांटिटी इज द परसेंटेज एरर इन्वॉल्व इन द मेजरमेंट ऑफ द लेंथ. एंड एज फार एज द क्वेश्चन इज कंसिडर इतना ही क्वेश्चन है. सो वी हैव डिकोडेड द क्वेश्चन. Now let us move on to the solution side of this numerical. Now in order to solve this numerical, सबसे पहले हम लिखेंगे all the given data that's been given to us. So हम सबसे पहले quickly हमारा given section बना लेते हैं. So given and let me just highlight this given as well. So the first quantity जो हमें दी गई है, in fact we have been given 4 such quantities is the reading in each iteration. सो हमारा जो सबसे पहला रीडिंग होगा लेट मी कॉल दैट एज A1. नाउ यहाँ पर A इज़ कम्प्लीटली आर्बिट्री. आप A की जगह पर कोई भी वेरिएबल या लेटर अज्यूम कर सकते हो. सो A1 इज़ आर रीडिंग 1. तो इस रीडिंग में हमारा जो लेंथ आया था दैट वाज 3.11 सेंटीमीटर्स. देन हमारे जो सेकेंड रीडिंग लेट मी कॉल इट एट A2 उसमें जो लेंथ का रीडिंग आया था दैट वाज 3.13 सेंटीमीटर्स. देन हमारा जो थर्ड रीडिंग में लेंथ आया था दैट वाज 3.14 सेंटीमीटर्स एंड हमारा फोर्थ एंड फाइनल रीडिंग में मेजरमेंट जो आया था लेंथ का दैट वाज अगेन 3.14 सेंटीमीटर्स. एंड इसी के साथ साथ वन मोर क्वांटिटी जो हमें दी गई है इन द क्वेश्चन इज द लीस्ट काउंट ऑफ द डिवाइस. तो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट दिया गया है. सो आई जस्ट क्विकली मेक दैट एज वेल. सो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर caliper is given as 0.01 centimeter. That's it. इसके अलावा क्वेश्चन में और कोई क्वांटिटी हमें गिवन नहीं है. Now once we have written all the given value, let us move on to the next section of our solution, that is to write the to find section, जहाँ पर हम लिखेंगे सारे क्वांटिटीज जो हमें ढूंढने हैं. ठीक है. सो इसी के साथ we have our to find section. So let us quickly write all the quantities which we have to calculate. First, question में दिया गया है we have to find the mean or the average length from all these measurements. So first quantity जो हमें ढूंढनी है is the mean length of our steel plate, and we are representing this mean length as mean of readings. So a mean. So ऐसे हम ये mean length को represent करेंगे. नाउ सेकेंड क्वांटिटी जो हमें ढूंढनी है दैट इज़ द मीन एब्सोल्यूट एरर इन्वॉल्व ड्यूरिंग ऑल दिस मेजरमेंट्स. सो हम जो है उसे रिप्रेजेंट करेंगे एज मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर इन्वॉल्व इन दीज मेजरमेंट्स एंड इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एज डेल्टा ए विच रिप्रेजेंट्स द एरर्स इन द रीडिंग
and we are finding the mean error, hence it is delta A mean. And then the third quantity जो हमें ढूंढनी है is the percentage error. ठीक है, एंड दैट्स इट. हमें बस तीन ही क्वांटिटीज ढूंढनी है या तीन ही चीज़ें ढूंढनी है. इसके अलावा और कुछ क्वेश्चन में हमें हमसे पूछा नहीं गया है. तो विद दिस हमारा जो है टू फाइंड सेक्शन इज ऑल्सो डन. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल द फॉर्मूलाज विच विल बी यूजिंग to calculate all these quantities using all the given values. So we'll quickly prepare our formulae section. So formulae, and we'll highlight formulas as well. Why not? तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे इज़ टू कैलकुलेट दिस मीन लेंथ. दिस इज हम यहाँ पर एवरेज का ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे. सो सिंस वी रिप्रेजेंट मीन लेंथ एज ए ऑफ मीन, दैट इज रीडिंग मीन का रीडिंग. तो हम क्या करेंगे, हम ये चारों रीडिंग को ऐड करेंगे एंड देन विल डिवाइड बाय द नंबर ऑफ रीडिंग्स. तो द फर्स्ट फॉर्मूला इज अ सिंपल एवरेज फॉर्मूला, दैट इज एडिशन ऑफ ऑल द रीडिंग्स प्लस एडिशन ऑफ ऑल द रीडिंग्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ रीडिंग्स, दैट इज 4. सो इस ये सॉल्व करने पर हमें जो है हमारा फर्स्ट क्वांटिटी मिल जाएगा, दैट इज द मीन ऑफ लेंथ. सेकेंड क्वांटिटी जो हमें ढूंढना है, दैट इज टू कैलकुलेट द मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर. But there's a small challenge before we find the mean of absolute error, and that challenge is कि हमको individual errors अब तक पता नहीं है. तो हमारे पास सारी readings है, but इन readings में जो error involved है वो नहीं है. So we need a way to calculate individual absolute errors as well. And उसका formula हमने देखा था, that is to calculate the absolute error for all individual values. So that is given to us as mod of average reading minus the individual reading. So if we were अगर हम ये कैलकुलेट करते हैं for every reading, तो हमें चार individual absolute errors मिल जाएंगे. And once we have our individual absolute errors, we can now calculate the mean of those errors. By the same logic, we'll simply add all the errors के readings. So delta A1 plus delta A2 plus delta A3 plus delta A4, and we'll divide it by the number of readings, that is 4, and this will give us the mean value for the absolute error as well. And last but not the least, we are required to calculate percentage error as well. So percentage error calculate करने का formula हमने study किया था. So fourth, that is the percentage error, and the formula which we'll be using is a very simple formula. हम क्या करेंगे कि हमारा जो एब्सोल्यूट मीन है उसको हम डिवाइड करेंगे बाय द मीन रीडिंग दैट वी जस्ट कैलकुलेटेड, एंड विल सिंपली मल्टीप्लाई इट बाय 100. सो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट परसेंटेज एरर, एंड दैट्स इट. दीज आर ऑल द फॉर्मूलाज जिनका यूज़ कर कर हम ये तीनों क्वांटिटीज जो है वो हम फाइंड कर लेंगे. Okay, now the only part that's left is to substitute the given values in these formulas, solve it, and write the final answer. So we are into the final phase of our numerical, that is the solution. So सबसे पहले हम क्या करेंगे, we'll try to calculate the mean length using the first formula. So I can write from formula 1, I can say that the mean length, that is A mean, is equal to summation of all the readings. So सबसे first reading, that was A1 reading, was 3.11. The second reading, that is A2, was 3.13. Third reading, that is A3, was 3.14, and fourth reading, that is A4, was 3.14 as well. And we divided by the number of readings, that is 4. This is the formula to calculate average. And if we were to solve this, हमें जो हमारी mean length आती है, that is 3.13 centimeters. Since all the input values are in centimeters, so will be our output as well. तो हमारी जो mean length है हमारे steel plate की, that comes out to be 3.13 centimeters. This is the first quantity which was required by us to calculate in this numerical, that is the mean length. Now let us move on to the second quantity, and for that we'll use the second formula. So from formula 2, I can say that
the absolute error for first reading, that is delta A1, is equal to the mean reading which we have just calculated, that is 3.13, minus the first actual reading, that was A1, which was 3.11. इन दोनों का मॉड वैल्यू चाहिए, बेसिकली हमें हमेशा ये पॉजिटिव चाहिए. So 3.13 minus 3.11 comes out to be 0.02, and again this is in centimeters as well. So this was the error, scope of error or absolute error for the first reading. Now let us calculate the absolute error for the second reading, that is delta of A2. This is again mod of the mean length, that is 3.13, minus the reading length, that is A2 का length, which is also 3.13, and इससे हमारा error in second reading comes out to be 0, basically no error for the second reading. Then we calculate the error for reading 3, that is delta A3. Again, it is mean 3.13 minus the A3, which was the reading during the third iteration. It was 3.14. And if we were to solve it, the answer actually comes out to be mod of minus 0.01. And since it's mod, it becomes positive. So हमारा जो final answer है, that is again 0.01 centimeters positive, because we are only interested in the mod value. And then we have our fourth value, that is to calculate the absolute error for the fourth reading, which is again, as we have already done, mean reading, that is 3.13, minus the reading in the fourth measurement, that is 3.14, which again comes out to be 0.01 centimeter. Okay, and that's it. We have now calculated the absolute error for each reading, that is for fourth reading, and now we simply substitute all this value in our formula number 3, which is this, to calculate the mean absolute error. So let us calculate the mean absolute error. So I can simply say from formula 3, the mean absolute error, that is delta A mean, is simply addition of all the absolute errors. So first reading absolute error is, that is delta A2, is 0.02. Second reading absolute error, that is delta A2, is 0. Then we have third reading absolute error, that is delta A3, which is 0.01, plus the fourth reading, that is delta A4, which is also 0.01, and this entire term divided by the number of reading, which is 4. एंड अगर हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, सो हमें हमारा जो है एब्सोल्यूट एरर का मीन मिल जाता है, दैट इज 0.01 सेंटीमीटर्स. सो दिस इज द सेकेंड क्वांटिटी जो हमें हमारे न्यूमेरिकल में ढूंढनी थी, दैट इज द मीन एब्सोल्यूट एरर फॉर ऑल द मेजरमेंट, विच इज 0.01 सेंटीमीटर्स. विद दिस अब हमारा सिर्फ एक ही टास्क बचा है, दैट इज टू कैलकुलेट द परसेंटेज एरर, and uske liye we'll be using formula number 4. So let us quickly try to use the formula number 4 and get our percentage error as well. So I will write it from formula number 4. I can say percentage error. So let me just write it in shortcut. Percentage error is equal to delta A mean, which is the mean of absolute error, which we have just calculated. So that is 0.01. So हमने यहाँ से ये value substitute किया in the formula, and the second term, that is in the denominator, was the mean reading, which came out to be 3.13 centimeters as well, which was over here, that is from 1. So and completing the formula into 100. And if we were to solve this further, we would get a term as 1 upon 3.13. And if we solve this further, we get term 0.3196. Now, we have 4 decimal places, but हमने जैसे देखा था starting में, the least count of the device is just 0.01 centimeter.
matlab we'll have to round two places, round off the two places after the decimal position. So if we were to round off this for the two places after decimal position, the value comes out to be 0.32%, because we are calculating the percent error. And with this, we have calculated the final value, or the final quantity which was required by us, that was to calculate the error percentage, which is 0.32%. And with this, you can write a final statement where we say that the mean length for the following steel plate is 3.13 centimeters. The mean absolute error in the measurement of the length is 0.01 centimeter, and the percentage error is 0.32% as well. That's it. This was the sum. If you want the PDF of this solution, do check out the description box. With this, I hope it helped you. Thank you.